Yogi sir, can you play Saraswati Vandana? Okay, okay. Hello, Yogi sir. Chalo, okay, okay. I say we should start. It is time now. Hello, everyone. This is Professor Dr. Ashok Kumar Gupta, CMD RFI and Provost World Innovators University, Nigeria. Presently, I am sharing my experience and learning with Satpuda Educational Group, Balaghat, India. It has been a remarkably exciting journey of 24 years, and the group establishes 16 IDI, a CBSE affiliated school, a college of education and engineering, Polytechnic college in 10 different locations of MP, India. Satpuda Educational Group is the largest and most respected educational group in central India, trained over 20,000 plus youths in various disciplines, a strong alumni of 15,000 plus, and the placement record shows the training commitment of the group institutions. I feel honored to be invited to this workshop on power plant familiarization. The aim of this workshop is to provide the most complete and reliable source of information
on the recent advancements in the field. The workshop covers a broad range of topics. Now it's my privilege and honor to welcome all the dignitaries, resource persons, and experts available for this workshop. I'm thankful to Shri Sanjeev Mishra ji, Chairman, Shri Anshul Jaiswal ji, Director, faculty, and students of Satpuda Educational Group, Balaghat, India. And I'm also thankful to Dr. Saurabh Jain, Chairman RFI, for providing a platform for the students and faculty to run this show. I'm also thankful to Professor Dr. Monde Anyaro, Global President, Professor Dr. Catalino N. Mendoza, Registrar, Dr. Rudra P. Himire, Deputy Registrar, Ambassador Dr. Promise C. Chinna, Assistant Director, Research and Innovation, Management, other faculty and students of World Innovators University, Nigeria. I'm also thankful to the entire team of RFI and organizing institutes, that is Satpuda Group. I'm thankful to all who have given their input in this workshop and all participants who made this program a success. Thanks for your patience. Thank you again. Over to you. Now, I would like to welcome Shri Anshul Jaiswal ji, Director, for blessings to this workshop. Hello, everyone. Very good afternoon to all present here. And as the sir has mentioned, it has been a privilege for our college to organize such a wonderful workshop. And I would like to thanks once again, all the student staff present here and the expert who is about to deliver us some very useful information about this workshop. And I will also like to thank World Innovative University and all the person involved from the RFI Research Foundation of India. And it has been a privilege for our college to host this. And uh, without giving much in time, I would like the all the experts to start the session so that we can gain the useful information and get to know more about the power plant and how uh, the power plant and everything around us works, and will be very useful for us to get the depth of information from the experts themselves, who has been there since last 20 to 25 years. So thank you very much for the kind words to the Dr. Ashok Gupta sir, and just please carry on with this. Thank you so much. Thanks a lot. It was very nice to hear Ashul sir, and indeed it would be a great helpful for our staff and our students will know. नमस्कार. आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है? Can you hear me? No. आवाज नहीं. Thanks a lot. Now I request Shri Sanjeev Mishra ji, Chairman, Satpuda Group of Education Institutes, for his blessing words. Over to you, sir. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
आवाज नहीं आ रही? जो आपने मुझे मौका दिया सतपुड़ा ग्रुप को होस्ट करने का, इस RFI को बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इसमें हम मिलके काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहे हैं हर जगह, तो मैं चाहता हूं कि हम टेक्नोलॉजी और स्पेशलिटी को जोड़ें ताकि ना सिर्फ हम एक अच्छे स्किलफुल इंसान बने बल्कि हम दुनिया में रहने लायक एक बेहतर इंसान बन सकें। तो मैं चाहूंगा कि पूरे दुनिया में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी जो है वो सभी के जीवन में आए और हम इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट बन सकें। मैं आप सभी को इस अच्छे कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूं और सर को बोलता हूं प्रोग्राम शुरू करें सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा और हमारे जीवन में उत्साह भरता रहेगा। कार्यक्रम, the program is to continue the program. We request Saurabh Jain sir, Chairman RFI. Okay, is not available at the moment? Okay, no issue. So, Ajay sir, can you see Ajay sir? Yes, sir. Yeah. I request Ajay sir from NTPC. Ajay sir is working as additional GM in NTPC, National Thermal Power Corporation, and he is looking after FGD, fuel gas disposal system, enhancement of the burned gases accuracy to the atmosphere. He is a guest today, and he will throw some light on power plant familiarization for our faculty and students. Over to you, sir. Good afternoon, sir, and thanks for the introduction. Before starting, I would like to thank RFI for giving me this opportunity to share some of the learnings regarding power plant familiarization with a big group of young students. So I thank everyone from RFI, personally Dr. Gupta, Chairman RFI, and CMD RFI, and Shri Saurabh Jain, Chairman RFI, Mr. Anshul, Mr. Sanjeev Mishra from Satpuda Institute, and various dignitaries from probably who have joined across the border from Nigeria and from other esteemed countries. I thank you all, and let me start my proceedings. I hope my screen is visible to you. Yes, sir. Sure, thank you. So on the screen, what we are seeing is a miniature of a power plant. So in the next 10 to 15 minutes, we will be getting familiarized. We will be familiarizing ourselves with all the components of a power plant. So as just to have me an idea, just to let me have an idea of the present knowledge of participants, are you aware of the capacity of any power plant? How it is measured, and what is the installed capacity of power plants in India? What is the consumption of a city? How much power is required? What is the per capita consumption of power in India? Any ideas?
Anyone in the group would like to participate? हाँ तो हट जाते हैं Sorry. मैं ऑडिबल हूँ क्लियरली? Yes, yes, you are audible, but your screen is not visible of presentation. Your slide presentation sharing is not visible. Again, share your slide. Yes, it is showing me that I am presenting to everyone. Is it visible now? Yes, yes, it is showing, but not. It is just showing your photograph only. Okay. It is not showing the entire screen. Now it's come. It is showing. Okay. Yeah, it is showing now. Okay. 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 So we are now discussing about this power plant. So as you can see from the screen, a brief view. Like we are starting from at the heart of the power plant is this boiler. Okay, just a minute. The heart of power plant is this boiler, into which the coal is getting oxidized or coal is getting burnt, and from where the hot flue gases are released, and which in turn heat up this boiler metal, and inside the boiler metal we fill up high pressure water, which gets converted into high pressure steam. This steam then drives a turbine, drives in fact a set of turbines connected on a common shaft to a generator. Okay, now within the turbine, when the steam gets cooled, it is again sent back to boiler for reheating, then again sent back to other set of turbines, and in this way this generator shaft rotates and produces power, and then its voltage is step up and sent to the grid. Now for the flue gas, we also treat them to reduce their ash content, and then finally sent off to a higher height so that the pollutants are not concentrated at a single location. So let's move ahead. Let us start component by component. And just for a moment, the capacity of this plant is usually to the range of 500 megawatt for a single generator. This is the most common unit size in India. And other than this, there are 210 megawatt generators, then 660 megawatt generators, 800 megawatt generators are also there in India, and internationally there are generators up to 1000 megawatt and maybe even higher sizes also. But in India mostly we have 800 as a maximum, and mostly we have 500 megawatt generators. And the question that I was asking was, what is the average power consumption in India? It is in the range of 1500 kilowatt hour per capita annual consumption. And the installed capacity in India is just around 4.5 lakh megawatts. Okay. So moving ahead. So let's start with coal. This is the coal which is burnt inside the boiler, and a thermal energy is released from this coal. Okay, this thermal energy will be used to heat up water or steam. Hello? Anyone saying anything? No, sir, you can continue. Okay, so the water and steam will drive high pressure and high temperature, drive the turbine, and this turbine will drive the generator. Let's move ahead further. Okay, this thing we have discussed. Now let us discuss something about the coal. As we
all know that this is a fossil fuel. Okay, this is fossil fuel available inside the Earth's crust. So this is primarily composed of carbon and ash. Ash is nothing but that is a non-combustible matter. Okay, other than ash, there will be some amount of nitrogen, sulfur, oxygen, and obviously some moisture will be there. So as we are aware that they can be divided into 4 groups: anthracite, bituminous, lignite, and subbituminous. Anthracite is the best grade, then bituminous, then lignite, and then subbituminous. Okay, so mostly we are firing bituminous type of coal in our power plants, and plants are designed according to that also only. While in internationally, they are using some better grades because that type of coal is only available in their countries. While in our country, mostly bituminous coal is there, so our boilers are designed according to that. Now, these mines, this coal is mined from either from surface mine or an underground mine. The surface mines are used wherever the coal seam is very near to the ground, so that entire overburden can be removed easily, and underground mines are used where the seams of coal are located at significant depths. Okay. Now, what are the properties of coal? Okay. The property of coal that is most important for us is its heating value or the calorific value. Okay. There are various methods of measuring the calorific value, but mostly we use the useful heat value of a coal, that is the amount of heat liberated by burning 1 kg of coal, and it is measured obviously in kilocalorie. Kilocalorie per kg is the heating value. Now there will be some products of combustion including water vapor. If we condense that water vapor, some heat will be released, and that can also be considered as a heat release from coal. But normally it is not possible to cool the products of combustion below 100 degrees Celsius. So it is better to use the lower calorific value, which ignores the latent heat of evaporation of contained moisture. I hope I am clear with this. So normally Indian coal is having calorific value in the range of 300 to 3500 kilocalorie per kg. Okay, 300 to 3500 kilocalorie per kg. Let us move ahead. So Indian coal is classified in A to G grades, and in each grade there are various subgrades also, G1, G2, G3. So mostly we are getting G grade coal, and that to G7, G8 grade coal, whose calorific value is around 2800 kilocalorie per kg. Okay, and this is the formula used by various government authorities for calculating the useful heating value, that is 8900 minus 138 into percentage of ash content plus percentage of moisture content. So you can see that if ash is much higher in the coal, its calorific value will be less, and similarly if moisture is high, calorific value will be less. So from the coal mine, the journey starts for a power plant, because the coal is a useful input. It has to be transported to the plant, and normally it is done with the help of railway wagons. Okay, so these wagons can be of 2 types, either the bottom opening or box and wagons. There are 2 types of wagons used in India for transporting coal. The first one is BOBR, or bottom open, bottom reclosed type, and the second one is box and wagon, box wagon only. Okay, so this is the coal wagon, which is bottom open type. Now, once the coal mine operators, they load their coal into the wagons, and if the coal mine is very near to the plant, we normally we as NTPC send back these wagons to the mine end and get the coal filled into the wagons. Now, once they load it, then
we again bring these wagons to our plant and empty it. Now, how to empty them? Because for a 500 megawatt unit, 1 hour, 350 tons of coal will be required. 350 ton is nothing but 3,50,000 kgs of coal in every hour for 1 unit. So if there are 5 or 6 units, then for a 5 units, almost 2 lakh kg coal will be required per hour. So that much amount of coal has to be unloaded also. So entirely they have to be done automatically. It is not feasible to manually unload it. So that's why these bottom open wagons are very helpful. There we empty them on our tracks. Within the track, there is a belt conveyor mounted. This emptied coal is getting dropped on the belt conveyor, where it is getting automatically transferred to the crusher house, where it will be crushed to small particles, and it will be either stored or used in boiler. So this way you can see that the coal is going automatically. Now another type of wagon is boxen wagon. Sometimes when the coal is to be transferred over long distances, then mostly this type of wagons are used, box wagons, because the coal cannot be theft easily, and so we will use a boxen wagon. Now when we use a box wagon, then again I have to say that it is not possible to manually unload it. That's why we have to tilt the entire wagon itself. So there is the arrangement called wagon tippler. In this wagon tippler, the entire wagon can be inserted. It will grip the wagon from the top, and this entire assembly will get tilted by 180 degree, so that this entire coal, mostly it is 160 to 170 degree, so that the entire coal will again get fallen on the bottom track, and then again it will be transferred automatically through belt conveyors. So in a usual plant, we will have both wagon tipplers as well as I think Saraj disconnected. Let us wait for something.
मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? ओके, हाउ लॉन्ग बैक डिड आई डिस्कनेक्टेड? कितना टाइम हो गया था डिस्कनेक्ट? Just 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. ओके, अभी स्क्रीन विजिबल है? Yes, yes. Okay. Visible. तो हमने ये वैगन टिपलर वाला पोर्शन डिस्कस हो चुका था। नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है लेकिन वो स्लाइड नहीं दिख रही। हाँ, अब दिख रही है। हाँ, ये डिस्कस हो गया था। ओके, वैगन टिपलर तक हो गया था डिस्कस। यस यस यस। ग्रेट ग्रेट। तो अभी हम लोग आगे मैं कह रहा था कि जब वैगन टिपलर से हम लोग कोल को ट्रांसफर करके बॉयलर के अंदर में भेज दिया जाएगा। इसके बाद बस ये है कि इसका साइज करीब 200 mm तक रहेगा। इसको हम लोग एक क्रशर हाउस में क्रश करेंगे। ये क्रशर हाउस में 200 mm साइज का कोल इनपुट करेंगे और आउटपुट करेंगे 20 mm साइज का कोल। ठीक है, इस कोल को जो बॉयलर के एंड पर जो कोल बंकर्स हैं उनमें स्टोर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब इस कोल को अगेन फर्दर पल्वराइज करेंगे। ठीक है, कोल मिल में इसको काफी फाइन पार्टिकल में पल्वराइज करेंगे। फाइन पार्टिकल्स इतने फाइन होंगे वो कि जो हम घर में टेल्कम पाउडर यूज करते हैं उससे भी ज्यादा फाइन होंगे ये। ठीक है, अब ये जो फाइन पार्टिकल्स है इसको दो ऑब्जेक्टिव है हमारे फाइन करने के लिए। एक तो कि इसका कंबशन जल्दी हो जाए और दूसरा इसको हम बॉयलर तक एयर के प्रेशर से हमें भेजना है। तो इतना फाइन होगा तभी वो एयर प्रेशर से लिफ्ट होगा। ठीक है, अब इसको जो है लिफ्ट करने के लिए एक और प्राइमरी एयर फैन होगा जिसका कि टेम्परेचर हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे पहले बॉयलर में उस एयर का, और वो एयर कोल मिल तक आएगी। कोल मिल के टॉप में कुछ पाइप्स होंगे, उन पाइप में एयर और कोल का मिक्सचर बॉयलर तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से बॉयलर के सारे कॉर्नर्स में वो एयर और कोल का मिक्सचर पहुंचेगा। अंदर में जब ऑलरेडी ज्यादा टेम्परेचर उसको मिलेगा तो ये फाइन मिक्सचर जल्दी से कंबशन होगा और विद इन 1 to 1.5 सेकंड ही उसको लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, ये इसका हाइट कितना होगा? अराउंड 100 मीटर्स। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए 15 मीटर से लेके 95 मीटर तक पहुंचने में उसको 1 से 1.5 सेकंड लगेगा। इसमें इसका टेम्परेचर यहाँ पर जो है आपको 1400 डिग्री सेल्सियस करीब पहुंच चुका होगा। तो ये उसके होने से आसपास की ट्यूब में जितना भी पानी है वो सब उबलने लगेगा और हाई स्टीम हाई प्रेशर टेम्परेचर में वो बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से फीड वाटर जो हम बॉयलर में भेजेंगे पानी वो वेरियस इकोनोमाइजर देन ड्रम से होता हुआ ये सर्कुलेशन पंप्स है, सर्कुलेशन पंप से होता हुआ वाटर वॉल्स में पहुंचेगा। वाटर वॉल के अंदर में कोल कंबशन हो रहा है, इनसाइड में उनके ट्यूब के अंदर में तो पानी भरा हुआ है बट उसके अंदर में जो कैविटी है उसमें कोल कंबशन हो रहा है। उसके फर्नेस के आसपास इन सबका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें स्टीम बनेगा, स्टीम बन के अगेन ड्रम में स्टोर होगा। तो ड्रम में अगर कुछ वाटर वेपर्स पहुंचे हैं तो वो पानी फिर से नीचे आ जाएगा और जो स्टीम निकला है वो हीट होने फर्दर सुपर हीटर को चला जाएगा। ठीक है, तो ड्रम में कुछ सेपरेटर्स होते हैं जो स्टीम और वाटर को अलग करते हैं और इस तरीके से सुपर हीटर, हाँ, इस तरीके से सुपर हीटर्स में स्टीम हमारी सुपर हीट होते हुए, सुपर हीटर भी कई स्टेजेस में होंगे। अब जैसे ये पेंडेंट सुपर हीटर है, देन फाइनल सुपर हीटर। तो ये हमें इतना सुपर हीटिंग इसीलिए करना है कि इसमें कोई भी वाटर वेपर का ड्रॉप न रहे, जिसके चलते ये पूरी तरीके से सुपर हीट होके टरबाइन तक पहुंचे। ठीक है, फिर ये एचपी टरबाइन में जब इससे वर्क लिया जाएगा इस स्टीम से तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। तो उस कम टेम्परेचर स्टीम को फिर से हम बॉयलर में ले आएंगे
और उसे गर्म करेंगे। तो ये एक बार और प्रोसीजर देख लीजिए, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। इसमें किसी को कोई डाउट है? मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, yes, it is visible. ओके। तो इस तरीके से ये साइकिल हमारी चलती रहेगी। अब हम देखते हैं टरबाइन साइड में क्या हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि सुपर हीटर से निकल के स्टीम एचपी टरबाइन में आई। एचपी टरबाइन जो है रोटेट होने लगेगा साइमल्टेनियसली एक ही शाफ्ट पे। बाकी की टरबाइंस भी है, जैसे इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, देन लो प्रेशर टरबाइन एंड देन जनरेटर। तो अभी स्टीम हाई प्रेशर टरबाइन में है। इससे जब हम वर्क ले लेंगे स्टीम से तो थोड़ी उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा 300 तक। अगर इसी टेम्परेचर लो टेम्परेचर स्टीम से और आगे भी वर्क लेंगे तो इसमें कंडेंसेशन होने का चांस है। तो इसको अवॉइड करने के लिए इस स्टीम को हम फिर से हीट करने के लिए बॉयलर में भेज दे रहे हैं। और बॉयलर में हीट करने के बाद फिर इंटरमीडिएट प्रेशर और लो प्रेशर टरबाइन में वर्क लिया। यहाँ पे फर्दर इसका एक्सपांशन किया। तो ये आप लोगों ने जरूर थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा स्टीम टरबाइन के वर्किंग प्रिंसिपल। तो जो है कुछ रिएक्शन टरबाइन कुछ इंपल्स टरबाइन का कॉम्बिनेशन होते हुए इसे स्टीम से सारा हमने वर्क ले लिया और कंडेंसर में भेज दिया। उसको कंडेंसर में किस लिए भेजा कि ये जो स्टीम है ये डीमिनरलाइज्ड वाटर की है, हाई प्योरिटी वाटर है। तो इसको हम छोड़ नहीं सकते एटमॉस्फेयर में क्योंकि वो काफी कॉस्टली वाटर है, वेरी हाई प्यूरिफाइड वाटर है। तो इस स्टीम को फिर से हम कंडेंस कर लेंगे, अगेन वाटर बना लेंगे डीएम वाटर, और इसको क्लोज साइकिल में अगेन बॉयलर में भेज देंगे स्टीम बनने के लिए, स्टीम फॉर्मेशन और बॉयलर में काम करने के लिए। लेकिन आपने एक सेकंड, आपने कई बार पावर प्लांट्स में देखा होगा कि स्टीम के बादल जरूर उठते हुए दिखते हैं आपको। कूलिंग टावर में जो पानी ठंडा हो रहा होता है तो वहां से वो स्टीम के बादल निकलते हुए दिखते हैं। ये जो वाटर है सेकेंडरी कूलेंट जो इस पूरी स्टीम को कूल कर रहा है, कूलिंग वाटर इनलेट, ये पानी गर्म होकर के कूलिंग वाटर आउटलेट से निकलेगा। यहाँ पे मान लीजिए इनलेट में इसका टेम्परेचर करीब 35 डिग्री सेल्सियस होगा डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड वेदर, और आउटलेट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इस 45 डिग्री सेल्सियस के वाटर को अगेन हमें कूल करना है और 35 डिग्री का बनाना है। तो ये काम होगा कूलिंग टावर्स में। तो कूलिंग टावर्स में कई जगह आपको काफी ह्यूज वेपर फॉर्मेशन दिख सकता है। तो इस तरीके से कूलिंग टावर में इस वाटर को अगेन कूल करके वो भी क्लोज सर्किट में चलता रहेगा। जितना भी इवोपरेशन लॉस होगा बस वही मेकअप हम करेंगे। ठीक है। अभी ये एलपी टरबाइन के नेक्स्ट एंड पर एक जनरेटर होगा। ये पूरा टरबाइन का शाफ्ट 3000 आरपीएम पे घूम रहा है और इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन वोल्टेज नॉर्मली 21 केवी है। ठीक है। हमारे घर में वोल्टेज सप्लाई होता है 220 वोल्ट्स और ये है 21,000 वोल्ट। और इवन इससे भी इसे आगे स्टेप अप किया जाएगा क्योंकि जितने हाई वोल्टेज पे हम करंट ट्रांसमिशन करेंगे उतना ही करंट कम होगा और उतना ही कम I²R लॉसेस होंगे। ठीक है। तो इसलिए इसको नॉर्मली 220, 400 और 765 किलो वोल्ट तक इंक्रीज कर लिया जाएगा इस वोल्टेज को एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। और देन इसको आपके ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू हमें लोड एंड तक लेके आएंगे, जैसे सिटीज तक लाएंगे। सिटीज में अगेन इसको स्टेप डाउन करेंगे। ठीक है। तो इसलिए आपने सिटी एंड्स पे भी देखे होंगे बड़े बड़े ये सब स्टेशन जिसमें कि वोल्टेज को कम किया जाएगा एंड देन हमारे घरों तक ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो इस तरीके से ये पावर प्लांट का साइकिल था एंड आई थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो कुछ पूछ सकते हैं। So, right, Professor sir, thanks a lot for giving me this opportunity, and I hope you have a good conference going on further. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.
डॉक्टर गुप्ता आप भी शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे. Yes, yes. There was some issue. Okay. So, have you completed? Yes, I have completed. And Okay. Okay, thanks a lot. thank you. And Mr. Amit Gupta is available with us. Mr. Amit, will you share something? Yeah, definitely. Thanks a lot for giving me the Yeah, he is opportunity from over here. Indore, and he is very much having very good leadership quality. Yeah. Thank you so Amit much. sir, are you able to hear me? Yeah, definitely. Please. Yeah. I am Please. audible, sir? Yes, you are. Yeah. So thanks a lot for giving me the opportunity. Can you please do my video on? Actually, I am just getting a message that video is off. No issue. So thanks a lot, Mr. Ajay, and thanks a lot, Dr. Ashok Gupta, for giving me the opportunity over here. And yes, definitely, it was nice presentation and as well as fantastic learning given by Mr. Ajay Gupta, who is from NTPC. And definitely, I heard many things about Mr. Ajay, that he is doing fantastic work over here. And today, he has shared nice learning with us. So definitely it would be very helpful for all the participants who are attending over here, as well as the students who has participated in this session. So thanks a lot. Thank you so much, Dr. Gupta, for inviting over here. And definitely in future, I would also like to share some presentation over here on personal development as well as leadership skills, so that the students and the participants will be get benefited out of here. Thanks a lot. Thank you so much. Over to you, sir. Thank you, Amit sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks for your blessings. And definitely we'll keep in touch with you and we'll call you for some more sessions. Now, Mr. Rudra Prasad is available with us. He's from Nepal and is a Deputy Registrar of World Innovative University, Nigeria. So, I request Dr. Rudra sir, are you able to hear me? Okay. Sir, please. Yes, sir. Yes, sir. Mr. Thank you. Yogi, Thank you so much. Thank you so much, sir. Make him host, and he will able to present his presentation. Anything or open his video, please. Yes, it's my speech, sir. Thank you. Thank you so much for giving me this opportunity to speak in the conference. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Respected honorable guest of honor, chief guest, special guest, RFI chair, managing director and RFI team, honorable global president of World Innovators University, provost of World Innovators University, registrar of World Innovators University, dean, professor, head of departments, coordinators, and all distinguished members of World Innovators University. It's me, Associate Professor Dr. Rudra Prasad Gimire, and Deputy Registrar of World Innovators University, would like to express my gratitude to all of you welcoming to plant familiarization workshop organizing by World Innovators University, Research Foundation of India, and other STEAM organizations. It's my great pleasure to be with you at this workshop program. Thank you for giving me this opportunity to take part in this program. It's my pleasure and honor on behalf of the Global President, Ambassador Professor Dr. Monde Enorio, to welcome you
all to World Innovators University, Department of Finance and Economics, Faculty of Business and Innovation. World Innovators University is a multicultural, multilingual, and innovation-driven global lifelong learning institution for the development of human capital at all levels and in all fields of study, human endeavors, activities, development process, professions, practice, aspects, and ramification to the art and science of innovation and education. Department of Finance and Economics, and other departments, as well as the Faculty of Business and Innovation at World Innovators University strive hard to have quantitative and qualitative research and its improvement in the level of education, innovation, environment, finance, and economics. Entirely, we can say that the industry sectors or the manufacturing sectors, these all can have participation with greater enthusiasm. We are grateful to provide world-class professional education at World Innovators University without limits and beyond academics. Our graduates are expected to be outstanding professionals with the knowledge, capacity, practical skill, and experience to deliver expected results in the global and dynamic business environment. Our faculty are seasoned scholars and industry practitioners committed to teach, innovate, and research in a broad range of disciplines, encompassing the broad fields of multidisciplinary subjects. We are proud of rich array of leadership, innovation, and professional development opportunities available to our students through research and innovation. At World Innovators University, we have various degree programs, workshops, seminar, training sessions, symposium, guest session, class, summit, and international conference to complement the curriculum of different subjects. World Innovators University entails work and network of professionals and practitioners across several continents of the world and have established collaboration with institutions of higher learning, research organizations, innovation centers, government ministries, departments, agencies, and universities towards the promotion of ethical practice and professional standards in the business administration, knowledge management profession, and practice. I'm excited about the opportunity ahead of us and highly delighted to work with such devoted stakeholders of the World Innovators University. I'm always interested in your input and ideas, as well as ways we can make the World Innovators University a more vibrant and exciting place. Please feel free to contact us to learn more about how to can we connect it with World Innovators University. So it stands as a distinguished institution having undergone official registration, approval, and recognition under the laws of the Federation of Nigeria. This recognition extends not only to World Innovators University itself, but also encompasses its innovative qualification and objectives. This formal acknowledgement solidifies World Innovators University adhere to the established legal framework within Nigeria, ensuring compliance with the regulatory standards set forth by the country's governing laws. So let's rise this university across the world. We are living in different countries. We are living in a diverse capacity. So we have to build up this university with a new movement. The comprehensive recognition, registration, and approval of World Innovators University and its innovative qualification and objectives under the laws of Federation of Nigeria affirm the institution's commitment to operating within the legal view outlined by the Nigerian authorities. This official status reinforces World Innovators University credibility and underscores its dedication to offering educational standards that align with the established legal and regulatory framework within the nation. So this is the initiatives of university with the innovation journey. Innovation refers to something new or to a change made to an existing product, idea, or field. One might say that the first
telephone, and now smartphone is an innovation. Innovation is the practical implementation of ideas, as we all know, and the result in the introduction of new goods or services or improvement in offering goods or services. Innovation is an important factor in any business environment or to establish any new journey of institutions or the company. It serves to determine the sustainability of business operation and profit-making initiatives for the involved organization. The 21st century business environment is characterized by the aggressive competition, and that shows the relevance of innovation and the science. There is an increase in the ratio of the numbers of business for every given industry. Business that fail to adopt innovation as a strategy are most likely to succumb to the competition within the involved industries. The advent of technology has led to the enhancement of innovative ideas and activities. This has made organization growth be rendered increasingly challenging. In order to remain relevant in the market, they need to engage innovation as an integral growth strategy. So this plant formalization workshop is a very influential, innovative program to all students, faculties, and practitioners in this industrial world. Knowledge dissemination about fuel plant, hydro plant, water plant, and other many manufacturing plants transform the capacity of present human capital and understanding to fit in industry operation and management. This workshop will fulfill the needs of innovation in plant and future development plant at this changing technological world. World Innovators University dedicates innovative contribution to the community across the world. Thank you so much. Thanks to all participants and organizers. Once I would like to thank you to our honorable respected Professor Dr. Ashok Kumar Gupta and Global President of World Innovators University, as well as President of Research Foundation of India. Thank you so much. Thanks a lot, Professor Dr. Rudra Prasad. It was nice to hear you in this platform. Now, if anyone wants to ask any question, can ask. It is question answer session. So Ajay Gupta sir will reply on this your queries. Is there any query? Either you can write in the chat box or you can ask there. Okay. So it was nice session. Yeah. Is there anyone? Yeah. Anyone is trying to speak something? Okay. So it is time to summarize now. As we know that the power is defined as the rate of doing work. Or the formula for power is work done divided by time. Power plant, as rightly said Ajay sir, is an industrial facility that generates electricity from primary energy. Most power plants use one or more generators that converts mechanical energy into electrical energy in order to supply power to the electrical grid for society's electrical needs. Power plant converts raw energy sources such as coal, nuclear, heat, or wind into usable power in the form of electricity. A thermal power plant, which is the one of the most common types, is a plant that creates power by burning fuel to convert it into electricity. Now, there are various sources of electricity, as rightly said by the presenter. Electricity cannot be mined. एक खदान में से नहीं निकलती है.
फ्रॉम द ग्राउंड लाइक कोल, जैसे कोयला निकलता है, ऐसे वी कैन नॉट डिग, खोद के नहीं निकाल सकते. सो इट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी. इसको हमें द्वितीयक ऊर्जा कहते हैं, मीनिंग दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स. अब प्राइमरी सोर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस है, सनलाइट है, विंड है, हाइड्रो पावर है. इन सब से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. पावर जनरेटिंग यूनिट में क्या होता है तो बताया सर ने कि इज ए प्राइमरी डिजाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे हीट से हम लोग जनरेट कर सकते हैं. हीट, जहां हीट से जनरेट करते हैं उसको थर्मल एनर्जी जनरेटिंग फॉर्म कहते हैं, जनरेटिंग प्लांट कहते हैं. वो हीट हम लोग कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल से, जैसा सर ने बताया. कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है. सोलर थर्मल एनर्जी से हम कर सकते हैं, जियो थर्मल से कर सकते हैं, और न्यूक्लियर से कर सकते हैं. इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी भी हम यूज कर सकते हैं पावर प्लांट में, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी के लिए काम आती है. विंड क्या आपने देखे होंगे, विंड एनर्जी से भी पावर प्लांट बनते हैं. सोलर इलेक्ट्रिक फ्रॉम सोलर सेल्स ये भी एक है. और केमिकल एनर्जी फ्यूल सेल्स या बैटरीज से हम लोग जनरेट कर सकते हैं. फॉसिल फ्यूल का सर ने बताया कि कहाँ मिलते हैं, कैसे बनते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर मेड फ्रॉम डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बताया था. फिर उसके बाद में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं वो दैट डिपेंड्स ऑन ए डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर. ऊपर से जो पानी नीचे गिरता है फ्रॉम द रिजर्वायर टू रोटेट ए टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. घूमने वाली चीज जो स्टैटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल. फिर सोलर थर्मल पावर जो बहुत सारे वो लगाते हैं, कलेक्ट एंड concentric sunlight to produce the high temperature needed to generate electricity. ये आजकल बहुत अपने इंडिया में हो रहे हैं. और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनते हैं. जियोथर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो use steam to produce electricity. The steam comes from reservoirs of hot water found a few miles और मोर बिलो दी अर्थ सरफेस. पानी के अंदर जो गर्म गैसें होती है उनसे बनाते हैं. तो ये सब चीजें हम लोगों ने आज देखा है. विंड पावर आपने देखे होंगे कि पवन चक्की जो चलती है, विंड पावर प्लांट इज अ विंड एनर्जी सिस्टम दैट टर्न्स द विंड्स काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ऐसे हम लोगों को पता लगा चीजें. ये भी बताया कि मेगावाट में हम लोग मेजर करते हैं, और जो कि 1 मिलियन वाट के बराबर होती है इलेक्ट्रिक पावर. मार्च 31, 2024 तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 442 गीगावाट थी, 442 गीगावाट. गुजरात में करीब 53 गीगावाट, और महाराष्ट्र में 46 गीगावाट, राजस्थान में 40 गीगावाट. ऐसे अलग अलग अपने कंट्री में ये काम हो रहा है. अब इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर का क्या काम होता है? तो इसके एडवांटेज है कि इलेक्ट्रिक पावर इज इट्स रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई, रन्स द इक्विपमेंट एफिशिएंटली एंड कंटिन्यूअसली. ये आराम से काम करता है. So transportation of electricity is easy once the transmission lines are functional, and they work for years and need to very less maintenance. Maintenance भी बहुत कम होता है. Power plant लगाने के लिए they provide a very reliable source of power. Power plants can be built to generate a specific amount of power, making them very efficient, and they can be located near population centers, making power accessible to more people. इसको कोई डिसएडवांटेज भी है पावर प्लांट के कि वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं बनाने में. इसलिए कोई भी जनरली प्राइवेट पार्टी कम करती है, सरकारी ज्यादा होती है. दे कैन बी डिफिकल्ट टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है. एंड नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. तो कुल मिला के बात यह है कि
power plants can be classified into different types according to their working principle. और these types are thermal, nuclear, hydraulic, wind, ऐसे हो सकते हैं. Hydroelectricity is the most common type of renewable energy, but different parts of the world use different types of power plants. देश में अलग अलग हो सकता है based on their natural resources. जैसे कि यूरोप में थर्मल है, न्यूक्लियर है, और अमेरिका में हाइड्रोलिक है, विंड है. ऐसे अपने इंडिया में सभी मिलेंगे आपको. तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने सीखी. हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं और जो रिसोर्स पर्सन हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और सबसे अधिक RFI का हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने शांतिपूर्वक सुना. ओवर टू यू योगीराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टेक्निकल सपोर्ट दिया. थैंक यू ऑल. गुप्ता सर. हेलो गुप्ता सर.